Hello friends, today we are going to discuss certain important provisions given under Civil Procedure Code. First thing, Section 13 and second, Section 14. Section 13 is talking about when foreign judgment not conclusive. कब विदेशी निर्णय निर्णायक नहीं होगा. Section 13 is giving कि generally unless the contrary is proved, a judgment given by a foreign court, it is conclusive. Okay, but there are few grounds given under Section 13 of CPC which talks about कि foreign judgment shall not conclusive if it is not given by a court of proper jurisdiction, it is not based upon merit, it is not based upon the principles of natural justice, it is not based on the right presumption of international law, it talks about the wrong interpretation of any Indian law, the decision is obtained by fraud. So there are few grounds are given under Section 13 that foreign judgment shall not be conclusive if it is based on any of these grounds. Other than these grounds, if there is a foreign judgment, it would be considered as a valid one. Okay, so here we are talking about the validity of a foreign judgment कि विदेशी निर्णय को हम इंडिया में मान्यता देंगे या नहीं देंगे, हम उसे मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं. दिस इज अ थिंग गिवन अंडर सेक्शन 13. तो फर्स्ट थिंग, फॉरेन जजमेंट इज कंक्लूसिव इफ इट इज नॉट बेस्ड अपॉन दी एनी रॉन्ग प्रिजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत को गलत साबित करते हुए कोई डिसीजन दिया गया है किसी फॉरेन कोर्ट द्वारा, तो इट विल नॉट बी कंक्लूसिव, उसे हम सही नहीं मानेंगे. फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट विच इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत में या भारत से बाहर अगर कोई कोर्ट है जो भारत की सरकार ने एस्टेब्लिश नहीं किया है और एंड इट इज़ नॉट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, it would be considered as foreign court. So if it presume any wrong presumption of the international law. Second, अगर कोई जजमेंट है जो भारत के लॉ को गलत बताता है या भारत के लॉ को गलत साबित करते हुए दिया गया है, if there is any wrong interpretation of any Indian law को गलत बताते हुए कोई जजमेंट दिया गया है, the judgment or the decision was obtained by fraud, where one party committed fraud and obtained a decree of a court, then it will not be conclusive. Then it is not, court was not having the proper jurisdiction. Yeah, we know about the jurisdiction of a court कि it is a territorial jurisdiction, monetary jurisdiction. Okay, so basically territorial jurisdiction and the pecuniary jurisdiction, subject matter related jurisdiction is there always in the case of jurisdiction. So where a judgment is given by a civil court and which is a foreign court as well, and it is not having proper jurisdiction regarding the money, regarding the place, regarding the subject matter, okay, then it will not be conclusive. It is not fulfilling the principle of natural justice. There are two basic principles of natural justice. First, here the other side, audium partem, and no one can be a judge in his own cause. आपको दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद डिसीजन देना होगा. If there is any decision given by a foreign court without hearing both the parties, it will not be conclusive. Okay. And second thing, if judgment is given by the court, okay, audium partem में here the other side, दोनों पार्टी को नहीं सुना है, and where the judge is also involved or he is having any kind of interest in the subject matter and he decided a case, the one person is interested in the case matter, it shall not be conclusive. So these are the things given under section 13 कि when a foreign judgment shall not be conclusive. This is the first part. Section 14, presumption as to foreign judgment. Presumption means उपधारणा. फॉरेन जजमेंट के बारे में एक इंडियन कोर्ट क्या मानेगा, क्या प्रिज्यूम करेगा. जनरली प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रिजम्पशन इज गिवन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट. प्रिजम्पशन, कोर्ट मे प्रिज्यूम, court shall presume, and conclusive proof.
कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेगा, ये सेक्शन 13 में दिया गया है. एंड द थिंग्स रिलेटिंग टू द प्रिजम्पशन are given under section 14 कि if there is any judgment of a foreign court is bring to a produced to the Indian court, Indian court के सामने कोई foreign judgment produce किया जाएगा, तो after the production the court can presume unless contrary is proved that the judgment is given by a court of proper jurisdiction. कि अगर आप इसके विरुद्ध साबित नहीं कर देते हैं कि no, it was the court was not having a proper jurisdiction, that particular up to that particular time period court will consider, court shall presume that the judgment is given by a court of proper jurisdiction. So this is section 14. It is just a presumption of an Indian court regarding the foreign judgment as to jurisdiction. तो यहाँ पे जो presumption है ये सिर्फ jurisdiction का है. तो सेक्शन 14 और किसी की बात नहीं करता. इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द जजमेंट और नॉट, द जजमेंट इज कंक्लूसिव और नॉट, हम इसे मानेंगे या नहीं मानेंगे. ये सेक्शन 13 में कहा गया है कि वेदर इट इज़ कंक्लूसिव और नॉट. ओके, वो निर्णायक होगा या नहीं होगा, इंडिया में अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो सेक्शन 13 में बात करता है. सेक्शन 14 इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रिजम्पशन. कोर्ट इज गोइंग टू प्रिज्यूम दैट और कोर्ट इज नॉट गोइंग टू प्रिज्यूम दैट. तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम. ओके, तो इट इज द प्रिजम्पशन इज ओनली रिगार्डिंग द jurisdiction. Okay, so these are the two provisions given in the Civil Procedure Code, section 13 and 14. 13 conclusiveness of a foreign judgment and section 14 presumption as to foreign judgment. In next classes we will discuss the place of suing. For right now, thank you.